Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well and happy Independence Day to everyone. Today we are going to learn some important math rules that will help you to solve questions including powers and brackets. Once you understand these rules, you will be able to solve question number 1, 2, 3 and up to so on. Rule number 1. Power of a power. When a power is raised to another power, you have to simply multiply the exponents. Number 2. Product rule. When multiplying two powers with the same base, what you have to do, you have to simply add the exponents. Rule number 3. Power of a product. When a product is raised a power, give the power to each factor inside it. Distributive law. Multiply the term outside the bracket with each term inside the bracket. As we have already done question number 1 in class, now let's move to the question number 2 of exercise 7b. Here we are simplifying expressions like x raised to the power 4 and whole power 2. So our first step is to identify the base and the exponents. Here the base is x, the first exponent is 4 and the second exponent is 2. If we have a power raised to the another power, we apply rule number 1, that is power of a power. In power of a power rule, we simply multiply the exponents. In this question, we have base, that is x, and first exponent 4. What we have to do, we have to simply multiply 4 with 2, and 4 multiply 2 equals to 8. So the answer is x raised to the power 8. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, y रेज टू द पावर 5 इंटू होल पावर 3. जब भी हमारे पास दो पावर्स आ जाती हैं तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल. पावर ऑफ पावर रूल में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो पावर्स हों उन पावर्स को आपस में हमने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई. जैसे कि y की पावर हमारे पास 5 और होल पावर में क्या है 3, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ. जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 15, और ये हमारा आंसर होगा. Let's take question number 3 part 1 from exercise 7b. First, identify the base and the exponents. Here both terms have the same base 2a. The first term has an exponent of 2 and the second term has an exponent of 3. Apply the product rule, that is when multiplying powers with the same base, we have to add the exponents. So 2a raised to the power 2 into 2a raised to the power 3 is equals to 2a, that is same base. We have to add their exponents, 2 plus 3. So 2 plus 3 equals to 5. 2a raised to the power 5. We have 2a raised to the power 5. Now apply the power of a product rule, that is when a product is raised to the power, give the power to each factors. So 2 raised to the power 5 into a raised to the power 5, that is 2 raised to the power 5 equals to 32 and a raised to the power 5 by multiplying two factors. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. 10x रेज टू द पावर होल पावर 2 मल्टीप्लाई 10x रेज टू द पावर 3. जब भी हमारे पास बेस सेम हो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं. यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है 10x और पावर्स क्या है हमारे पास 2 और 3. हम क्या करेंगे, सिंपली पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे. 10x रेज टू द पावर 5. अब हमारे पास ये एक टर्म बन गया. अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो 10 रेज टू द पावर 5 एंड x रेज टू द पावर 5. जब हम 10 की पावर 5 लेते हैं, मतलब 10 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई 10, वी विल हैव 100,000 एंड x रेज टू द पावर 5. स्टे एज इट इज. ओके, सो वी हैव 10x रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 lakh x रेज टू द पावर 5. Now solve question number 4 of exercise 7b. What are we looking at? A number outside the bracket, that is 2, a sum inside the bracket, that is x plus 3, and the structured number into sum. So we will apply a distributive law, that is multiply outside the term by each term inside the bracket. Formally, k into a plus b, which is equals to ka plus kb. Now we have 2 into x plus 3. We will multiply 2 or we will distribute 2 with each term inside the bracket. 2x plus 2 multiply 3, that is 2x plus 3 to the 6.